গহাশাহী মারহাবা। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, সত শ্ৰী আকাল। আল্লাহ যিটো বস্তু হেদায়ত দিব লাগে সেইটো এটা বাকলিত আবদ্ধ হৈ আছে, তাৰ ওপৰত জুইৰ শিখা লাগি আছে। ইয়াক মুকলি বা খোলাটোৱে হৈছে চৰাই চাদৰ বা হেদায়ত। ভাই, আপোনাৰ হৃদয়খন কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু কেনেকৈ বন্ধ হৈ আছে, কেনেকৈ খুলিব লাগে। হৃদয় সকলো মখলুকাতে আপোনাৰ হৃদয়খনত আবদ্ধ হৈ আছে। তাৰ ওপৰত 1,80,000 জুইৰ শিখা লাগি আছে। তেনে কোনোভাৱে খোলা নাযায়। এতিয়া মুৰ্ছিদৰ কামেল ৰহমানী নজৰে সেই 1,80,000 জুইৰ শিখা জ্বলাই হৃদয় খুলি দিয়ে। তাৰ পিছত হৃদয়ৰ মুখ খুলে আৰু তাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হোৱা 5টা লতাইফ ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু তাৰ পৰা খাদ্য সৃষ্টি কৰে। এতিয়া লতাইফবোৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত থাকে। যেতিয়া কলব আল্লাহু কৈ থাকে, তাৰ পৰা নূৰৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু এইবিলাক জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আলৰা টিভি চাওক আৰু জ্ঞান অৰ্জন কৰক আৰু সৈয়দীৰ এইটো ভিডিঅ' চাওক। গহৰ হাফেজ। अल्लाह ने जिस चीज को हिदायत देनी है वो एक बंडल में बंद है, उसके ऊपर नार के जाले हैं, उसको खोलना शराए सदर है। भाई सीना बंद कैसे है तेरा जो खुलेगा? इसलिए कि सीने की सारी मखलूकें तेरे दिल में बंद हैं, उसके ऊपर जाले लगे हुए 1,80,000। वो तिलावत से, नातों से, कवालियों से नहीं जाते। नजर जिना दी कीमिया होवे सोना कर दे वट, वो कामिल जात की नजर से 1,80,000 जाले जलते हैं। फिर मुर्शिद कामिल अपनी नजर डालता है कल्ब के ऊपर, वो 1,80,000 जाले जो है उनको जलाता है, तो कल्ब का मुंह खुल जाता है और उसके अंदर जो 5 लतीफे बंद हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है उसमें जर्दी होती है, उससे जो है चूजा बनता है, इसी तरह माद्दाए लताइफ कल्ब के अंदर होता है। जब वो जाले हटते हैं तो ये लताइफ प्लक करके जो है बाहर आते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर।